Hi guys. Okay, welcome to the semifinals 2. Let's start the quiz without wasting a lot of time. The first question goes to Rohit. Nair, at a distance of about 4 hours from Mumbai, the village of Vai has been the backdrop of several Bollywood films over the years. Due to its ambiguous look, it is often used to represent some other village in another part of the country. Okay? In this movie, it was shown as Uttar Pradesh's Lalganj. And in this movie, it was the village of Charanpur in Uttar Pradesh. What are the two movies that we are talking about? Gangajar and Swades. The question passes to Pranav. By the way, guys, give me both the answers, and once I get the right answers, both the answers right, I will tell you the marks. Pranav, This Swadesh, Charanpur. One is Swadesh. Uh, Lalganj. the question moves to Minty. You're on mute. Welcome to Sajjanpur and Swadesh. No, Minty. The question moves to Adarsh. Sorry? No, it's not Akrosh. So the question, okay, I'm going to give Rohit part points because Swadesh is the right answer for the second part, Charanpur. Now I will give you a clue which will carry points of 2.5 for the second answer. This movie protagonist, the character, uh, is known by both the name and the surname very famously. And he had troubled relationships with his stepfather and half brother. The movie obviously is set in Uttar Pradesh. And Sorry, the movie character or the the actor? character, the character, No, the character. Okay. And 1 second, don't answer the question. Let me give you all the clues that I want to give. Okay, so as I said, the protagonist, the character, has troubled relationship with his stepfather and his brother and half brother, and he calls himself as this fictional character. This fictional character is got it. someone who. Okay. Dabang. Yes, it is the Bang. Nice answer. Amazing answer, dude. So Rohit gets the other part points as well, 7.5, if only you answered it first. Next question goes to Pranav. Pranav, oh my God, this is a very difficult second word, second name. Chuck was inspired to write the book something after after a camping incident with his friends. Okay, when he complained to some other campers that they were playing their radio too loudly, a broke out. Even though Chuck's face was smashed up, none of his co-workers the Monday after the incident acknowledged that he looked any different. Now, this is a book that we are talking about, whose author is Chuck Palahniuk. I don't know if that's right, but that's the name of the author. And I want you to tell me which movie are we talking about. It's the same name of the book and name of the movie is the same. And there is one more hint over here where Times reported the reaction of the movie after watching the movie, that it touched a nerve in the male psyche that was debated in newspapers across the world.
So there are a lot of clues inside the question if you really look at it. So some words that you can pick up and you can tell me the answer. इंसिडेंट देख के तो 6-5 2 ही दिख रही. मैं वही देने वाला था भाई आंसर. फाइट क्लब है क्या? आई एम जस्ट गेसिंग. Sorry? फाइट क्लब है क्या? तुक्का है. Amazing tukka. It is Fight Club. Beautiful tukka this is. Good job, man. Awesome. So yeah, it was the same scene where even when Edward Norton, no one really realizes that he was beat up when he was beat up. Well, he thinks, I mean, you know, उसको लगता है लेकिन नहीं हुआ. No spoilers. Oh shit. Yeah, sorry. Hey, इसको भी spoiler नहीं कर सकते. Sorry. This is not called a spoiler. Okay. मैं बोल रहा हूँ. अच्छा मुझे पता ही नहीं था. मेरे को क्या लगता था कि फाइट क्लब केवल जाहिद खान वाली है. रितेश देशमुख, सुनील शेट्टी. अरे फाइट क्लब देखा बाद में ये फाइट क्लब. ये रीमेक रहेगा उसका. वही लग रहा है. ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था मुझे. शिट, मेरे को नहीं पता था. मंडे और कोवर्कर का थोड़ा ये लगा. All right. So the next question goes to Minty. Minty, Dash and Dash are songs both composed by Kalyanji Anandji. ठीक है? The former of the latter two was featured in Hindi film Aparadh and the other one was featured in Dawn. ठीक है? So दोनों गाने the first one is featured in Aparadh and the other one is featured in Dawn. ठीक है? The song Don't Funk With My Heart by Black Eyed Peas features compositional samples of songs derived from the above two. So what are these two songs? एक मिनट, ये दो गाने दो डिफरेंट गाने. दो डिफरेंट गाने हैं. एक अपराध से है, एक डॉन से है. ठीक है? सुना हो गया? Okay, सुना हो गया? हाँ सुना जरा. नको. नहीं सुना. जैसे तूने सुना ही ना, ऐसे तो मैंने कोई ट्यून ही नहीं सुनी. बोलो टेल. I'm just thinking कि दो सॉन्ग है. Apart from it being composed by Kalyanji Anandji and being featured in Don't Funk With My Heart, there is one more connection to these two songs. Okay, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना एक and दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है. वो अपराध का नहीं है वैसे. चलो ठीक है. हाँ, I've given my answer. Next question, the question passes to Adarsh. मस्ती के लिए सही जवाब मत देना. सही जवाब पता ही नहीं है भाई. हाँ तो मस्ती वाला. के लिए आंसर दो. एक तो वो है अपना क्या कहना वाला गाना. क्या कहना का टाइटल सॉन्ग एंड दूसरा वाला अपना फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. गलत है. इसके लिए मैं आपको 100 पॉइंट दूंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन पासेस टू रोहित. अरे यार मेरे को भी वो डॉन वाला पता था. ये मेरा दिल अपराध और आ जाने जाए क्या. हाँ वो अपराध का थोड़ी है. नहीं पता मेरे द को. क्वेश्चन पासेस टू प्रणव. ट्यून सुना. The question passes to Pranav. ये डॉन का बता दिया क्या? क्या बोले? डॉन का गाना बता दिया. मेरे को भी डॉन का ही गाना पता. दोनों गाने. अरे भाई ट्यून दूसरे वाली ट्यून कैसे बनाई फिर तूने? अरे गाना मैंने वो डोंट फंक विद माय हार्ट सुना है. ये का दिल जलोगा दिल जला के. क्या? दिल जलोगा दिल जला के वो गाना है ना डॉन में. वो यूज किया है.
शाहरुख का बोल रहा है क्या? दोनों आंसर्स दो, दोनों आंसर्स दे दो। अपराध का मेरे को नहीं पता। आंसर दे फिर हम बोलेंगे गलत है। ठीक है, मिंटी तेरा हिंट ये है कि दोनों का जो दोनों गानों में एक ही एक्ट्रेस ने। अरे वो तो वो यार मैं पता पहले है, ही समझ वही गया था ना, guess वो कर- क्या वो है पता ही ये, है, वो तो guess कर पहले ही लिया मालूम पड़ था। गया था। वो अभी तक guess ये मेरा कर- दिल प्यार का दीवाना बोला, ये तो क्या के लिए बोलते। एक्ट्रेस, अरे एक्ट्रेस इज अ बिग हिंट देन, और क्या बोल सकती हूँ मैं? अरे यार ये वही कौन मैं सी उसी के गाने याद उसी कर के रहा हूँ बैठ चक्कर के, मेरे को में तो नहीं हमने समझ। इतना कुछ बोला है, नहीं तो हम कैसे बोलते हैं। 1 मिनट रुक। करना चाहिए तो गूगल का एक बार डांस का स्टेप देख ले, हमको बता दे। नहीं मैं पास करूंगा, मेरे को नहीं आ रहा है। अब तो मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहा, मैं तो पास कर रहा हूँ। रोहित मस्त जूम आउट होके जूम इन हुआ। नहीं है पास आदर्श आदर्श। Is it मिंटी पिया तो अब तो मिंटी आजा। मिंटी मिंटी पास मिंटी हो गया। आदर्श 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 पिया क्या? पिया तो अब तो आजा। नहीं यार रोहित बता दे, आंसर बता दे रोहित। अरे यार अरे मोहब्बतें में भी हेलन थी ना। हाँ तो मैं वो ओ हसीना जुल्फो नहीं, उसमें अपराध। ओके हेलन नहीं हो। प्रणव का डायरेक्ट था क्या? नहीं मिंटी का था। मेरा ठीक है, डायरेक्ट था। प्रणव पास कर दे। प्रणव को मैं पॉइंट तो 1 पॉइंट तो उसको गाना गुनगुनाने का तो उसको मिलने का, मैं दूंगा उसको। नहीं इट इज ए नौजवान है सब हैं? ए नौजवान है, नो नो नो। ये क्या है ये? नहीं पता है मैंने सुना ही तो नहीं है। टॉर्चर है ये, मैं तो कहीं कोर्ट तक में ट्यून पे गया मैच नहीं कर रहा था। मेरे को भी नहीं मालूम ये ये वाला तो गाना। ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है ये कुछ। I can't help it, but 5 पॉइंट किसको मिला है? 5 but पॉइंट किसको 5 मिला है? point मिंटी 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 को। तो मेरे को 5 7 point। मिलना चाहिए ना यार, 2.5 के लिए हम नौजवान आ रहे थे। It's okay. ठीक हाँ है, यार ये तो कोई 5 बात नहीं होती point यार। मिंटी को 5 point मिल गए। और अब आदर्श, the movie's 14 song soundtrack, an unusually large number, is also one of the most popular हम in आपके हैं कौन? Bollywood history. हम आपके हैं कौन? यार ये मेरे को नहीं पूछ सकती थी क्या? ये क्या है? चल हो गया ये मेरा, हो गया। random है, ठीक Now है, name all the random 14 है। songs. Now name all the 14. रोहित नायर तेरा क्वेश्चन है अभी। ओके Okay. The movie raised many eyebrows when a mammoth set was erected at Film City in Goregaon. ठीक है? A glass and mirror set. The set cost as much as 8 lakhs, which was mammoth in the context of that era. Although the entrance of the view of the set from outside was shot in Steep Home Island in Bristol. In Bristol Channel. Now, this is the Steep Home Island of Bristol Channel. I need you to tell me what is the name of the movie and yeah, I guess you can just tell me the name of इतना ही बता दे, बहुत तेरे को बोल रही है। and what is the no wait what is the name of the movie and what is the set for? Whose set is this? Like in the movie, what was the set meant for? इज इट मिस्टर इंडिया एंड मोगैम्बो का अड्डा? No. No. The question passes to Pranav. Read the question properly. I want the name of the movie and the whose set is this? What set is this? There are hints in the question. आईब्रोज मतलब आंखें वगैरह ऐसे कुछ है क्या? क्या बोले? नहीं 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 कुछ तो बोल दिया, बोल दो। शाकाल वाला मूवी है क्या? शाकाल वाला। I need the answer. I need the movie's name and what was the set for? शान. Okay, you just you're guessing the movie's name? हाँ शान. Okay, what is the set for? I need 2 answers. Villain this thing. हिंदी में बोल हिंदी में बोल, चलेगा नहीं।
हिंदी में बोल. विलन का अड्डा क्या बोलते हो उसको? Okay. You know what? I can give it to you. दे दो. यार शाकाल बोला It रहे is हो. Shakal's Den and Shan. Good वही job. तूने क्यों दिया था? पहले पता वही उसने तूने क्यों पहले दिया उसने था? आंखें बोला था। आंखें बोला था, फिर भी मैं चुप रहा, ठीक है, आईब्रोज देख के, eyebrows बोला। आईब्रोज देख अरे के. मेरे को मूवी का याद नहीं आ, वो मूवी का नाम याद नहीं आ रहा था। Okay, the question goes to Minty. In Ratatouille, it appears on the bridge over the Seine in the scene where Skinner chases Remy. Okay? In Finding Nemo, it appears among the toys in the waiting room of the dentist. Okay? In Cars, it appears in the drive-in movie. And in Up, the grape soda bottle cap that it appears in the grape soda bottle cap that Ellie gives to Carl. All these are movie references. ठीक है? चारों मूवीज में ये मूवी का रेफरेंस है. कौन सा मूवी के बारे में बात कर रहे हैं? Yeah, I'll not take much time. I'll pass. I don't know. I'll pass. Okay, Adarsh. All the four are references to a movie. Is it Shrek? It's not Shrek. Question passes to Rohit. Is it The Good, the Bad, the Ugly? No, it's not that movie. The तूने question तीन मूवी का passes नाम to दे दिए. खत्म. Pranav. इसको पता है आंसर. प्रणव हैंग हो गया. फाइनल स्ट्रीक दिख रहा है आपको? मैंने चारों मूवी देखा लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ मेरे को भी। Yeah, you'll have to really watch the movie to see it. No, pass. Moves to Minty. The movie that we are talking about is also an animation film, and from the same franchise from the same production company that has created and the creative company that has created these four movies. So it is from the same production house and it is a animated movie as well. Iron Man. Nahi. Question moves to Adarsh. I know the answer is wrong. Wall-E. It's not Wall-E. आप मेरी लिस्ट में. The question moves to Rohit. Is it The Lion King? No, it's not Lion King. The question moves to Pranav. No, pass. Roadside Romeo. Toy Story. Yes, it is Toy Story. पहले कहाँ गए? अभी पॉइंट एक मिनट टॉय स्टोरी हमेशा से एनिमेशन थी ना? पिक्सर का. The next question goes to Adarsh. Adarsh. Oh, it's Toy Story, by the way. Toy Story आंसर है. Adarsh, according to Deepak Shirke, who played the politician Bachchu Bhai, the film was shot without a script. The director Kanti Shah visited him and narrated the story in one line. यार ये आदर्श को नहीं जाना, ये गलत है यार. नहीं, ये आदर्श तक नहीं जाएगा यार. ये तो बहुत ही गलत हो गया यार. शिट. मुझे लग रहा है थोड़ा क्रिस्टोफर नोलन का इंस्पिरेशन था ये, तो मैं सोच रहा हूँ. अरे यार IMDb रेटिंग में ना बहुत ज्यादा ही सही है. I think it is गुंडा. एजुकेटेड गेस ले रहा हूँ. Oh my Actually, God. na, very educated. Okay, the next question goes to Rohit. The construction of the Dash household for this Oscar-winning movie is one of several feats accomplished during the production, and another being the construction and flooding of the entire semi-basement neighborhood. Now, which movie are we talking about? This is an Oscar-winning movie. Construction of the so-and-so household. For this Oscar-winning movie is one of the several feats accomplished during the production. Another being the construction. Parasite. It is Parasite. Correct answer. Nice. Okay, the next question goes to Pranav.
Pranav, this is the poster for Gajini movie. It has been inspired. It was inspired from sorry. मोमेंटो. No. गया बाबा बाबा बुबू ये क्या था? तू गया जो था तू पास No, गया no. तेरा Now I'm going to ask the question to Minty. Minty, this is the poster of Gajini movie. It was inspired from another Hollywood movie. ठीक है? Same type. I mean, whatever you're seeing right now. And it was inspired by another Hollywood movie. Name the Hollywood movie. Movie is inspired or poster is inspired? Poster. Hulk. Awesome. Memento बोल दिया बेचारा प्रणव. अच्छा मूवी का मेरे को भी लगा यार ये मोमेंटो सही तो बोला था. नहीं. That's what I'm telling you guys the question and you guys didn't listen to me. Okay. The question goes to Adarsh only. Okay. This movie was made on such a shoestring budget that X, the most well-known actor, was paid only 15,000 rupees for the movie. Okay. X had to bring his own Nikon camera to the shooting to use as a prop for his character, who was a photographer. Towards the end of the shooting, this camera was stolen, which amongst other painful memories of me, which was other painful memories of the film. Sorry, there was a little this thing. The protagonist keeps cribbing about it whenever he talks about the movie. So which film is this which won the Indira Gandhi Award for Best Director debut in 1983? So the director got Adarsh का director ना? हाँ, Adarsh. Director got Best Director debut in 1983, and you see the thing in the question. Is it जाने भी दो यार? It is जाने भी दो Nice. यार. Amazing answer, man. Amazing answer. फोटोग्राफर था ना. पहले हाँ. तो कुछ और सोच रहा था. Exactly. So Nasiruddin Shah lost his Nikon camera apparently, और उस टाइम पे ऐसे बहुत अच्छा कैमरा था कहते तो उसके बारे में हमेशा रोता रहता है. Yeah, the order is reversed. So the next question goes to Minty bhai. In an interview with Movie Phone, the protagonist said that he became interested in playing this role after a friend of his loaned him the graphic novel Arkham Asylum by Grant Morrison and Dave McKean in 2000. Okay? That's the name of the graphic novel. Now, after he read it, he told his agent that if anyone was making another so-and-so movie, he wanted in. So the protagonist read this graphic novel called Arkham Asylum, and he wanted in if anyone was making another so-and-so movie. So read the question properly. The clues are there in the question only. ये हॉलीवुड है कि बॉलीवुड है? और तेरे को मूवी नेम चाहिए या प्रोटैगनिस्ट का नाम चाहिए? Fill in the blank. Okay. Movie नाम, movie का नाम. Actually, it's not even movie का नाम. If you see, if you just tell me the मूवी का keyword. नाम एक ऐसी जो हर बार डिफरेंट नाम से आया है. वो एक मूवी का नाम भी है and at the same time the fill in the blank is basically the keyword associated with the movie. So if you can just tell me the keyword associated with the movie, I will give you points. एक मिनट, ये कीवर्ड का क्या मतलब है? वो मूवी हिंदी में बनी किसी और नाम से, जापानीज में किसी और नाम से बनी थी एंड यूएस में किसी और नाम से बनी थी. तुम्हारा जो ओल्ड बॉय जिंदा एक ही है, सेम स्टोरी पे बेस्ड है, जॉन इब्राहिम जिंदा में था. और आर्कम असाइलम से बेस्ड है क्या? हाँ ठीक है. The question moves to आदर्श. नहीं, प्रणव. Oh sorry प्रणव के पास जाएगा. Sorry yeah. बैटमैन. क्या बोले? बैटमैन. It is Batman. Yep. The next question goes to Rohit. Rohit, in this
spring of 1987, producer Joel Silver and director John McTiernan attended a performance of the play Dangerous Liaisons, okay, in which this person played the evil Vicomte de Valmont. Okay? Immediately, Silver and McTiernan realized that they had found their Hans Gruber. Name the movie and the English actor. So the movie का नाम तो तुम्हें बताना होगा about what they are talking, and the blank is the English actor. 5 points. वॉल्केरी है क्या? नहीं. The question passes to Pranav. Sorry, Adarsh. Maybe movie name is Hitler. सही movie है कि नहीं पता. नहीं. The actor का नाम guess कर दो. Oh yeah, you can guess the name of the actor. वो तेरे को guess करना है पहला actor. नहीं हो गया मेरा. अच्छा ठीक. You can. Sorry. Jack Nicholson. नहीं. The question passes to Minty. Actor और movie दोनों का नाम बता दे यार. ब्रेंडन फ्रेजर और बाकी मूवी मेरे को नहीं पता. नेक्स्ट. The question passes to Pranav. Die Hard movie है क्या? I need 2 answers, Pranav. Bruce Willis है क्या? Bruce Willis and Die Hard. The question passes to Rohit. रोहित का डायरेक्ट था ना? So yeah. Hint So I'll give you a hint. Okay, Hans Gruber, the person who we are talking about, the English actor, has also worked alongside. He has also worked in a movie franchise alongside Maggie Smith and Gary Oldman. It's a very simple hint. He has also worked in a movie franchise. So this movie is also it's a franchise. It's got a lot of movies, and he's also worked in another movie franchise along with Maggie Smith and Gary Oldman. Is it Johnny Depp? No. The question passes to Pranav. Hey, Johnny Depp sorry, Mexican Adarsh. Samuel Jackson. Samuel Jackson तो पक्का नहीं पता. पक्का American है, dude. Question moves to Minty. Minty, movie का नाम और actor का नाम. मूवी का तो नाम पता ही नहीं है, और एक्टर का नाम वो मिस्टर बीन वाला कौन है? No, it's not him. No, The हाँ ठीक है, छोड़ question दो. moves to Pranav. इंग्लिश एक्टर है वो, मैंने देखा ही नहीं. इंग्लिश. तेरे को वैसे आंसर आ रहा था ना? नहीं तो वो एक गेस गया ना मेरा. The question goes to Pranav. No, pass. Okay, so Pranav gets 5 points for guessing the movie right, which is Die Hard, and the Hans Gruber was Alan Rickman, अरे यार हैरी पॉटर. who played alongside Maggie Smith and Gary Oldman in Harry Potter. Sorry, so Pranav has answered the question. So the next question goes to Rohit. मटका फुल मटका. Rohit, the director stated, we went on to cast young college-going students. We almost thought of casting Rishi Kapoor Govinda at one point. We wanted a young cast. Dash was doing his films like Saugandh and Deedar at that time. He was involved in action films. He was an all-rounder who did everything from dance, comedy, action, comedy and action. When contacted about the film, he asked about dialogues.
He was especially drawn towards the lesser number of songs, action, and the title of the film. He was on board after this. Which movie am I talking about? So you can just you can tell me the name of the movie and name of the actor. So 5 points each. Is it Akshay Kumar and Khiladi? Super. Yes. That is the answer. Nice answer. The next question goes to Adarsh. It is Akshay Kumar and Khiladi. Oh, by the way, I read a small trivia about this कि apparently दीपक तिजोरी ऐसा मूवी खत्म होने के बाद सबको जाके बोल रहा था कि मैं मेरे वजह से मूवी हिट हुआ, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है. तो अक्षय कुमार ऐसा रो दिया करते उसके बाद. So the question, the next question. सिकंदर में उसने हिट करवाई. Of course. Actually, Johnny Lever ने कराई. Okay, so the question goes to Adarsh now. Adarsh, this is a conversation between two characters in a movie. ठीक है? Will Rodman says, I removed the name of one of the characters. ठीक है? It's a conversation between two characters, Will Rodman and someone else. And I removed the name of the character and replaced it with X. Now, I want you to tell me what is X. So, Will Rodman says, X, I'm sorry. It's my fault. This has to stop. This isn't the way. You know what they're capable of. Please come back home. If you come home, I'll protect you. And X says, X is home. So, X character का नाम है कि movie का नाम? X character का नाम है. मुझे character का नाम चाहिए और movie का नाम चाहिए. 5 point दोनों के लिए. Wizard of Oz? No, it's not Wizard of Oz. Okay, the question passes to Minty. Wolverine, Logan, मतलब दोनों सेम ही है. No, the question passes to Pranav. वो कैरेक्टर का और मूवी का नाम सेम है? नहीं. तो एलेक्स नहीं, इसका है क्या? एप, प्लैनेट ऑफ एप्स का है क्या? I want the movie name and the name of the character. उधर का नाम क्या रहता है? एलेक्स. The question passes to Rohit. Planet of the Apes and Caesar. Caesar. Rise of the Planet of the Apes. Okay, yeah, I can give it to you, man. You've answered it right. It is Rise of the Planet of the Apes. मैं ऐसे hint के लिए सोच रही थी. Should I say that these are the few words that the character X spoke करके? Caesar ऐसा गला पकड़ता है इधर उसको और बोलता है वो खिड़की में ऐसा बनाता है, क्या बनाता है वो? स्टार ये बनाता है ना, शेप बनाता है ना वो विंडो. हाँ, वो बाद में ना. अच्छा, मैंने मूवी देखी नहीं और क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगा कि वो जो विल रॉडमैन है बोल रहा है, ए तू घर आ जा, बोलते है मैं घर पे ही हूँ. Oh man. Okay, the next question goes to Adarsh. आदर्श को कैसे जाएगा? मैंने आंसर दिया. आंसर रोहित ने दिया ना. तो आदर्श, ये एक मूवी का सीन रिक्रिएटेड है. ठीक है, बहुत फनी है. So look at it in a funny angle. This, you don't have to know who that man is. You don't have to know who that dog is or anything. You just need to tell me एक मूवी का ये सीन रिक्रिएटेड है, कौन सा मूवी है. ये लोग कोई तो है ऐसे फेमस मूवीज को रिक्रिएट कर रहे थे, तो ये वाला सीन रिक्रिएट किए. तो यू कैन टेल मी व्हाट इज द मूवीज नेम. ये मस्त है. ये बाहुबली में क्या जो माँ उठाती है लास्ट में? ये वो भी सेम है. एक मिनट, नहीं है क्या? अमरेंद्र बाहुबली क्या? एक मिनट, नहीं है क्या? आई थॉट वही होगा.
मिंटी अपन अलग क्विज खेलते चल। लिंक भेजता हूँ मैं तेरे को। moves to Minty. बाहुबली 2। Okay, I'm gonna the question moves to Minty. I cannot give hint now. I just realized. टीचर को वैसे का आंसर पता है। तो बहुत फेमस मूवी है dude. डेल्मिशियंस। नहीं, अरे मैंने बोला था कुत्ते को मत दो, ठीक है देखो, लेकिन ओके द क्वेश्चन। अच्छा, इट्स नहीं एंटरटेनमेंट। रुक सौम्या डर रही है, आंसर देगा करके। Question passes to Pranav. 300 मूवी का है। नहीं, बस तो ऐसा होता है, इसको सब पता है। साले जैक स्नाइडर। Question passes to Nair. I'm pretty sure तुम लोगों ने मूवी ये नहीं देखा। तो काय के लिए क्वेश्चन रखा है? But it's a very famous movie. What can I do? I have to give a question for the. लेकिन उसमें अच्छा अभी हुआ है क्या, एक राउंड हो गया अपना? नहीं, मेरा बात रोहित। मैं हिंदी मूवी से सोच रहा हूँ। अरे आदर्श, ये समझ जा कौन सी पिक्चर है, मैं समझ गया अभी। नहीं, तूने दे दिया। One Flew Over the Cuckoo's Nest वो है क्या? It's not One Flew Over the Cuckoo's Nest. Now the question is going to Adarsh, right? हाँ। आदर्श को क्लू देना है ना, आदर्श का डायरेक्ट था ना ये। Okay, Adarsh, this is one of the final moments of the movie. The person who is holding the dog is the actor, and the dog is the actress in the gown. One of the final moments, like final scene में ये movie है। Shit. So the person who is holding the dog is the actor, the protagonist, and the dog is the actress. मेरे को लगा WWE ऐसा कोई मार रहा है, सब देख रहा है। क्या बोले? ऐसा लगा पीछे। Okay, पता नहीं। La La Land? No, it's not La La Land. The question passes to Minty. ए आदर्श, तू कैसा मिस किया रे, तेरी मेहरबानी है वो। अरे केसी बोकाडिया। केसी बोकाडिया। The question passes to Pranav. प्रणव बोलेगा आर्मी ऑफ डेड। नो, कुछ बोला क्या? मेरे को तो अभी भी 300 ही लग रहा है। Should I pass the question or should I? नहीं, रोहित को पता है ना। रोहित का आंसर पता है, उसने वो शिट करके किया था। हाँ, wait. प्रणव पास करूँ कि नहीं करूँ? बोला 300 वापस ना। I didn't understand if it is a funny. नहीं, उसका आंसर था। नहीं, आंसर था उसका 300। Pass. Okay, Rohit, now it goes. Dirty Dancing. It is Dirty Dancing. यार क्वेश्चन। देखा पेट पूरा सीधा नहीं गया, ऐसा नहीं। हाँ कुत्ते। वो कोई है ना, पॉपस्टार है। कौन है ये? ये कभी का मूवी है ये? 70, 60, 70s का है रे। हाँ कसम। अरे फेमस थी। हाँ काफी फेमस है। This is Dirty Dancing. Rohit gets 5 points for this after hint बोला. So कुत्ते का ड्रेस देखना चाहिए था ना तुम लोगों को। So the next question, हमारी जिंदगी में यही तो बचा है देखने के लिए। The last question of the quiz goes to Adarsh. गोगो जी आपका घाघरा। Adarsh, 11 years after the film's release, Amitabh Bachchan shared in an interview that everyone praised Aisha Kapoor for her performance, but real credit goes to Dash, who trained her perfectly for every scene. Who was the assistant director who went on to become a lead actor in 2007? So basically, I want you to tell me the name of the assistant director who helped Aisha Kapoor to give a brilliant performance in this movie that Amitabh Bachchan also acted. Farhan Akhtar. It's not Farhan Akhtar. Question moves to Minty. रणबीर कपूर। Beauty.
फरहान अख्तर का 2007 में आदर्श। अरे मेरे को नहीं पता रहा तो दे दिया। You can tell the name of the movie also, just ऐसे ही, वो उसके लिए points नहीं मिलेंगे। ब्लैक खेल रहे थे ना वो लोग। It is Ranbir Kapoor for the movie Black. Khatam. Okay, Congrats. let's see the scores. Oh man. Okay, so Adarsh gets 30 points. Right. Pranav gets 35. Yes. Minty gets 25 with the last बिल्कुल answer. सही. And the winner of this quiz is Rohit, who gets 42.5.